Good morning, students. In today's topic, I will be discussing about the sting apparatus found in the worker honeybees. As I have already mentioned that there are three castes in honeybee. These three castes means different type of honeybees where they are not only different in external morphology, behavior, but also have different function. As I have already told you that the queen honeybee sole purpose is to lay egg in order to increase the number of member of its colony. Her sole purpose is to lay egg throughout her life. The average lifespan of a queen honeybee is said to be 3 to 4 years, but it can live maximum up to 5 years when the conditions are optimum. Some bees are also said to live up to 7 years, but this is that the living up to 7 years is a rare occasion because generally egg laying is a very energy consuming process. It consumes a lot of energy, so maximum on an average queen honeybee lives up to 3 to 4 years. The workers are also short lived. Their maximum lifespan is also of about 150 to 200 days because they are constantly moving out of the hive in search of food, performing the guard duty, that is fighting against the enemy. So all this exposure to the outside environment also is harmful for them, and they may be killed during their journey by birds or even human beings. So their life is about 150 to 200 days. Similarly, drones die immediately after mating with the queen. So this is about the honeybees. The workers are specialized to produce honey. They are specialized to produce the hive as they have hypopharyngeal glands which convert the nectar of the flower and pollen into royal jelly, and they have wax gland in the last four abdominal region. There are four pair of wax gland which produces wax for building of the hive, and as the worker honeybee ages, that is it becomes about 21 days to 40 days old, the hypopharyngeal gland and the wax gland, their function decreases slowly, and eventually when they are about 40-45 days old, then they stop making honey, they stop making hive, and they start moving out of the hive in order to collect the food. They are equipped with, that is the worker as well as the queen are equipped with a specific function organ called the sting apparatus.
In honey bee queen, this apparatus is only used to fight the rival queen, whereas in worker, this apparatus is used to safeguard their hive. This apparatus is used to protect them. So, the structure of sting is very specific, and it is said to be the modified ovipositors. In female, we know that female insects, they have ovipositor which helps them to lay the eggs. But in worker honeybee, since the egg laying function is performed by the queen honeybee, the ovipositors are modified to form the sting apparatus. The abdomen of the honeybee has about 10 segments, 7 of which are obvious in the males, as I have already mentioned before. The first one, A1, is called the propodium and is attached to the thoracic segment and is better described as part of the thorax. The remaining part is known as the gaster and outwardly appear to have 6 segments. The last of these being A7, the remaining 3 segments are internal, that is inside A7. In some other member of Hymenoptera, the abdominal segment 8 and 9 becomes ovipositor, and some of these ovipositor drill into wood in a similar fashion to that which the honeybee sting penetrates the skin. Now this is the diagram of a sting apparatus which has the sting attached to the poison glands and the muscles. The sting mechanism is shown in the figure above. It is actually much more compact and folded, but in this diagram, a simplified version is shown so that the various component of the sting apparatus is known. हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हनी बीज में 3 जाति पाई जाती है, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। इन तीनों जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, इनमें बिहेवियर में अंतर होता है, इनके बाहर बाह्य आकार की यानी जो स्ट्रक्चर है, साइज़ है, उसमें अंतर होता है। क्वीन का आकार बड़ा होता है, उसके पंख छोटे होते हैं, एब्डोमेन नुकीले और बड़े होते हैं। ड्रोन्स आकार में क्वीन से छोटा होता है और वर्कर इन सभी से छोटा होता है। क्वीन अंडे देने का काम करती है, ड्रोन्स का काम स्पर्म प्रोवाइड करने का होता है और मेटिंग के तुरंत बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। वर्कर्स के अंदर अलग अलग उम्र के जो वर्कर्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे एक दिन का एडल्ट बी का काम छत्ते की साफ़ सफाई करना होता है और जैसे जैसे वह बड़ा होता है, पहले दिन के बाद दूसरे दिन से लेकर चौथे दिन तक वह बड़े लार्वे को फीड कराता है और चौथे से 7वें दिन वह छोटे लार्वे को, यंग लार्वे को फीड कराता है। इसके बाद कई सारे कार्य वह करता है, जैसे कि छत्ते का निर्माण करना, फिर हाइव का जो टेम्परेचर है उसको बरकरार रखना। उसके बाद का जो काम होता है वह छत्ते की रखवाली करने का होता है। और जैसे जैसे मधुमक्खी उम्र में, एज में बड़ी होती है और लगभग 40 डेज़ के बाद वह अपने छत्ते से भोजन एकत्रित करने के लिए बाहर भ्रमण करना शुरू कर देती है और भोजन एकत्रित करके लाती है। छत्ते का निर्माण करना, शहद का निर्माण करना, यह मक्खी जब लगभग 21 दिन की होती है तब तक ये कार्य करती है और जैसे जैसे
बड़ी होती चली जाती है और परिपक्व होती चली जाती है, हाइपोफेरेंक्स ग्लैंड और वैक्स ग्लैंड जो कि शहद बनाने के काम आते हैं, एंजाइम्स वगैरह सेक्रीट करते हैं, जिससे फूलों का रस और पोलन शहद में तब्दील होता है, रॉयल जेली में तब्दील होता है। और उसी तरह से एब्डोमेन के लास्ट 4 सेगमेंट्स में जो 4 जोड़ी वैक्स ग्लैंड होती है, उनके द्वारा वैक्स का निर्माण होता है छत्ते के लिए। पर जैसे जैसे मक्खी की उम्र बढ़ती जाती है, ये दोनों ही कार्य जो हैं वह करने में धीरे धीरे असमर्थ होती जाती है और फिर उसका काम हनी या नेक्टर को एकत्रित करना होता है। बाहर जाकर फूलों से मकरंद और जो पोलन है उसको एकत्रित, पराग को एकत्रित करके वह अपने छत्ते में जो दूसरी फोरेजिंग बीज होती हैं जो कि छत्ते में रहती हैं, उनको वह लाकर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वीन बी में भी स्टिंग अपैरेटस होता है, लेकिन वह स्टिंग अपैरेटस केवल अपने जो राइवल हनी क्वीन बी है उसको समाप्त करने के लिए ही इस्तेमाल में लिया जाता है। और रानी मक्खी लगभग मैक्सिमम 5 से 7 साल तक जीती है यदि बाह्य जो पर्यावरण है वह उसके लिए सूटेबल हो। एवरेज लाइफ स्पैन एक क्वीन हनी बी की लगभग 3 से 4 साल मानी जाती है। उसी तरीके से ड्रोन जो है क्वीन से मेटिंग के तुरंत बाद ही मर जाता है। वह ड्रोन वर्कर्स जो हैं उनकी लाइफ लगभग 150 से 200 डेज़ की होती है। ये भी निर्भर करता है कि जब वह अपने छत्ते से बाहर भोजन एकत्रित करने जा रहे हैं तो उन्हें किसी खतरे का सामना तो नहीं करना पड़ता। यदि उन्हें खतरा है, कई चीज़ों से खतरा होता है, जैसे दूसरी पक्षी, दूसरे इंसेक्ट्स, इवन जो ह्यूमंस हैं, मानव हैं, उनसे भी उन्हें खतरा होता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए वर्कर्स में ओविपोसिटर जो है वह स्टिंग अपैरेटस में तब्दील हो जाते हैं और यह दंश उपकरण जो है श्रमिक मक्खी में एक डिफेंस के रूप में काम में लिया जाता है जब उन्हें अत्यधिक खतरा महसूस जब वो करते हैं। तो श्रमिक मधुमक्खी में अंड निक्षेपक मूल कार्य को त्याग कर दंश उपकरण के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। मधुमक्खी को इस बात के लिए श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम एक हाइपोडर्मिक सिरिंज के रूप में इस उपकरण का निर्माण या विकास किया है और यह मधुमक्खी का एक डिफेंस अपैरेटस या ऑर्गन होता है। मधुमक्खी इसका उपयोग तभी करती है जब उसे अत्यधिक खतरा महसूस होता है, क्योंकि एक बार डंक का उपयोग अगर कर दिया जाता है मधुमक्खी के द्वारा तो इसके उपयोग के तुरंत बाद ही मधुमक्खी मर जाती है। डंक, मधुमक्खी के डंक में डंक जो है वह जब हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें देखते हैं कि पॉइज़न ग्लैंड यानी कि विष नाल बंद रहती है। यह 3 संरचनाओं से घिरी रहती है। एक पृष्ठीय कटारीय आवरण तथा 2 अधरीय कटारनुमा प्रवर्ध यानी लैंसेट। हम डंक की बात कर रहे हैं जो कि सुई के समान एक संरचना होती है और डंक में एक पॉइजन कैनाल यानी विष नाल बंद रहती है। यह डंक जो है 3 संरचनाओं से घिरा रहता है। पीछे की तरफ पृष्ठीय सतह पर एक कटारीय आवरण होता है जिसको कि स्टाइलेट शीथ कहा जाता है। वह 2 अधरीय वेंट्रल कटारनुमा यानी जिसमें कांटे के समान प्रवर्ध निकले होते हैं जिसको कि हम लैंसेट कहते हैं।
तीक्ष्ण कटारनुमा प्रवर्धों की पूरी लंबाई में पृष्ठ की तरफ एक खांच पाई जाती है जिसमें विष नाल फिट होती है। डंक के अंतिम जो सिरा है वह तीक्ष्ण यानी कि पॉइंटेड होता है। कंटिकाओं या दांतेदार प्रवर्धों से ढका रहता है जिससे डंक को शिकार की पेशियों में मजबूती से गड़ाया जाता है। कटारीय आवरण का आधारी भाग फूलकर एक गांठ या बल्बनुमा संरचना का निर्माण करता है, जबकि डंक एक जोड़ी भुजाओं में सतत रहता है। डंक में दोनों ओर 3 प्लेट्स का समुच्चय पाया जाता है जो कि लिवर का कार्य करता है। लिवर यानी उत्तोलक का कार्य करता है। डंक से संबंधित 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक विष ग्रंथि जो एक अम्लीय पदार्थ का स्रावन करती है और विष थैले में संचित करती है। यह विष थैला दंश घुंडी यानी स्टिंग बल्ब में आगे की ओर खुलता है। इसमें एक और ग्रंथि अटैच्ड होती है और यह ग्रंथि एल्कलाइन ग्लैंड या क्षारीय ग्रंथि कहलाती है जो पृथक रूप से स्टिंग बल्ब यानी कि दंश घुंडी में खुलती है। जब मधुमक्खी डंक मारता है तो डंक मारते समय कटारीय आवरण घाव करता है। कंटिकाएं डंक को घाव में थामे रखती है तथा कटारनुमा संरचना डंक को और गहराई तक धकेलती है। तत्पश्चात विष थैले से खोखले डंक द्वारा विष शिकार की पेशियों में इंजेक्ट कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया मधुमक्खी के उड़ जाने के बाद भी जारी रहती है। कंटिका युक्त डंक केवल श्रमिक हनी बीज में ही पाया जाता है। एक बार डंक मनुष्य की त्वचा में घुसाने के बाद मधुमक्खी डंक को वहीं छोड़कर उड़ जाती है, परंतु उसके बाद सामान्यतः मधुमक्खी मर जाती है क्योंकि यह दंश उपकरण जो है मधुमक्खी के एलिमेंट्री कैनाल से अटैच्ड रहता है और जब यह डंक त्वचा में छूट जाता है तो इस डंक के साथ मधुमक्खी के एलिमेंट्री कैनाल का कुछ भाग भी फटकर निकल आता है जिसके फलस्वरूप मधुमक्खी मर जाती है। डंक अपैरेटस के से मधुमक्खी के जो ग्लैंड्स जुड़े होते हैं उनमें से अलार्म फेरोमोन्स भी छोड़ा जाता है जब मधुमक्खी डंक मारती है और यह अलार्म फेरोमोन्स शिकार को चिन्हित करने के लिए होता है ताकि अन्य मधुमक्खियों को सिग्नल मिल जाए कि इस ऑर्गेनिज्म से उनको खतरा है और वह आकर अपनी सुरक्षा करें, अपने छत्ते की सुरक्षा करें। रानी मक्खी में भी जैसे मैंने आपको बताया था स्टिंग अपैरेटस होता है, लेकिन रानी मक्खी के स्टिंग अपैरेटस में कंटिकाएं यानी कि जो स्पाइक है वह नहीं पाया जाता है, स्मूथ डंक होता है उसका, तो इस वजह से वह अपने डंक का कई बार उपयोग कर पाती है। The sting mechanism is shown flat in this diagram so that we understand it. It is actually much more compact and
folded. The left side of this diagram shows the protractor muscles and is in the protracted position, and on the right hand side are the retractor muscle shown with the right hand lancet retracted. Parts of the sting. The cavity within abdomen 7 is called the sting chamber, and the whole of the sting apparatus is enclosed within it when it is not in use. The apparatus consists of three pair of plate: the oblong light yellow, quadrate strong yellow, and triangular dark brown. Two pair of protractor and retractor muscle move the quadrate plate up and down, which causes the triangular plate to act as a rocker, converting the linear motion of quadrate plate into a curved motion in ramus. Thus, the two lancet are advanced in an alternating fashion, which give rise to a vibration that can be felt by person being stung. All this movement takes place against the oblong plate, which form a rigid armature for the muscle to act against and the triangular plate to pivot about. The path that ramus transcribe is also constrained to a semicircular track by appendages to the oblong plate. The shaft of the sting consists of three hollow, sharply pointed structures which mesh together in a ziplock manner to surround a central canal. These are the left and right lancet, which are barbed, and the central dorsal stylet. The stylet at its inner end becomes larger and softer. This structure, known as the bulb, is the reservoir for the venom. It has pair of umbellar valve to push venom down into the shaft as it is forced into the victim. The venom sac and gland that produce other secretion are connected to the bulb. The darker component in cross section drawing at the right is the stylet, and the gray area is the central canal along which the venom is delivered. Each of the three components is stiff by virtue of cross-sectional shape. The action of stinging. When the sting is deployed, the bee bends its abdomen downward due to the action of muscle that connect the abdominal plate. The muscles set on the ventral side contract, thereby increasing the overlap between the sternite plate. On the dorsal side, another set of muscle contracts so that the membrane between the tergite plate is distended. This results in the bent abdomen, which in combination of the angular ventral movement of the sting shaft, this ensures that the sting shaft enters roughly perpendicularly into the skin of the victim. Perpendicular penetration is the most efficient as venom is delivered more deeply and the path through the tough skin is shortened. The force from the bee's leg, the muscles of the abdomen, and the effect of the backward rigged barb as the lancet reciprocate alternatively, all combine to produce a thrust, that is, a pressure that drives the penetration of the sting. Venom is pumped into the central canal
by the reciprocating action of lancet, each of which has an umbrella-like collector and valve. The pulse of the venom are delivered through the canal and squeeze out between the rubbing face of the two lancet. This is another feature that is of high efficiency as the venom comes in to contact with much larger area of the tissue than would be the case if the sting were similar to the hypodermic syringe. The venom leaks to small extent from exposed portion of the shaft, providing a pheromone alert at the earliest possible movement. This oblong drawing shows the action of lancet sliding on the rails of the stylet. The gray outline is that of the needle tip and is similar to scale. The portion shown is approximately half millimeter long and indicates that the sting will penetrate much rapidly than the needle.